ऑलराइट, हमारा डेटाबेस रेडी है, प्लस हमने टेबल्स भी क्रिएट कर दिए जो भी हमें चाहिए थे, एंड देन we also imported all our data into our tables. So now the question is, how do we read the data that we have in these tables now? And for that, we need to learn SQL. SQL is also known as Structured Query Language or SQL. SQL भी बोलते हैं, SQL भी बोलते हैं, और the full form is Structured Query Language. So as you can imagine, it's a query language. So it's a language used to query the tables in databases. I hope that makes sense. Okay. Now पहले प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि जब भी अगर हमें कोई डेटा वैलिडेट करना हो या कुछ फिल्टर करना हो डेटा पे, तो वी वर हेविली डिपेंडेंट इन एक्सेल. वी वर डूइंग ऑल ऑफ दैट इन एक्सेल. सो लेट्स से अ क्विक एग्जांपल वाज कि अगर मेरे को देखना है कि क्यू मैस्करेनस के, लेट्स से क्यू मैस्करेनस कहाँ पे, ओके, लेट्स टेक अ इजियर नेम व्हिच इज इजियर टू टाइप. सो आरबोस. सो हम लेट्स से वन क्वेश्चन इज कि आरबोस के नाम पे कितने एप्लीकेशंस कितने एप्लीकेशंस अप्रूव्ड है और कितने अप्रूव्ड एप्लीकेशंस. तो एक्सेल में हम मोस्टली क्या करते थे, एनालिस्ट आईडी पे फिल्टर मारा, आरबोस लिया, आउटकम पे फिल्टर मारा, अप्रूव लिया, एंड फिर इसका काउंट लिया, वी गेट 245. सो ऑल दिस वैलिडेशन फिल्ट्रेशन ये हमको अभी एसक्यूएल के सहारे करना पड़ेगा ऑन द टेबल्स इन द डेटाबेस. सो नो मोर एक्सेल. There will be Excel here and there, but the heavy lifting, all that heavy lifting, will happen using SQL. Why? Because now imagine कि CWC has grown in the business and now it has a lot of data to handle. अभी उसके पास सिर्फ 6,417 एप्लीकेशंस नहीं है, उसके पास काफ़ी सारे एप्लीकेशंस. सो नाउ अगर इतने सारे एप्लीकेशंस अगर हम एक्सेल में लेके आए एंड देन वी स्टार्ट फिल्टरिंग ऑन द एक्सेल, वो लटक जाएगा. इट विल से नॉट रिस्पॉन्डिंग. सो दैट्स वाई in real world, uh, when company grow, they start moving away from Excel in terms of storing data, in terms of doing analytics, in terms of doing data validation and all of that. जो भी हमने प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट वन में देखा, प्लेलिस्ट वन में देखा, all of that, most of that will need to happen in SQL. And then the visualization, like the dashboard that we created, will happen in Power BI. So I hope कि ये जर्नी कहाँ जा रहा है, right? Okay. So now that we cannot use Excel for validation and filtration, हम SQL मार के ये सेम चीज़ कैसे करें? That is what SQL is all about. So let's go back to our database CWC 03003032024. That's what the name we gave it. You can give any name you want. Now, if I want to know कि fact application table में क्या data है, so you'll have to run an SQL query on fact application table. So how do you do that? You say select star from fact underscore applications. Okay. अगर आप लोग को ये क्वेरी रन करते हुए एरर आया, so the first thing you need to make sure is इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करना एंड देन क्लिक ऑन सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा. क्योंकि अगर इस तुम्हारे लोकल होस्ट पे, ये लोकल होस्ट पे सब डेटाबेसेस इंस्टॉल्ड है. लोकल होस्ट मतलब तुम्हारा कंप्यूटर. तो तुम्हारे कंप्यूटर पे ये सब डेटाबेसेस इंस्टॉल है. सो उसको नहीं पता कि फैक्ट एप्लीकेशन कौन से डेटाबेस पे जाके रन करना है. सो विल हैव टू से कि ये डेटाबेस पे डिफॉल्ट करो इस डेटाबेस को, तो जितने भी एसक्यूएल मारूंगा मैं वो इस डेटाबेस पे मरेगा. दैट्स व्हाट इट बेसिकली मीन्स. ऑलराइट. सो आइडियली a typical SQL statement looks like this. Select star from fact application. इसका मतलब काफ़ी सिंपल है कि मेरे को फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में से गिव मी एवरीथिंग, सिलेक्ट एवरीथिंग, मतलब जो भी कॉलम्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है, सब मेरे को लाके दिखा भाई. सो देन वंस यू हैव रिटन द स्टेटमेंट, इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, एंड देन either you click on this lightning icon, or you can click or you can use a shortcut control plus enter, and you see the entire application database is here. All the columns that you see, now all the records will be here, but तुम्हें MySQL पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा नहीं. Okay, so that's fine, it's not a big deal. Sometimes you might want to export this data then. उसको क्या करना है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, and then you can just export all the
the results, export the results of this SQL query, which is nothing but the entire application fact table, into a CSV file, just like how you can export anything in. Okay, now this is a very simple SQL query. Now let me see similar way. I want to see कि dim analyst table में क्या क्या है. So as you can imagine, I would say select star from dim analyst. Okay. कोलन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अब उसको नहीं पता ना कि कौन सा क्वेरी रन करना है, तो दो क्वेरी है, तो तुमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो टू एंड द एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज कोलन. सेमी कोलन बोलते हैं या कोलन बोलते हैं, आई थिंक सेमी कोलन. ओके, एंड देन you select the second one, the query that you want to run, select that, and then control enter. Now you will see कि dim analyst table will be shown here. Alright, let's do one more. We'll say select star, और ना इसको तुम एक लाइन में भी लिख सकते हो, doesn't matter, but to read it, to make it look nice or to make it more readable, we separate it, but एक लाइन में भी लिख सकते हो. You can say select star from, let's say, dim underscore, let's say, देखो ऑटोमेटिकली ये टेबल का नाम आएगा द मोमेंट यू राइट डिम, क्योंकि उसको पता है कि डिफॉल्ट स्कीमा कौन सा है, ये वाला डेटाबेस, और इस डेटाबेस में जो भी टेबल है वो ऑटोमेटिकली तुमको सजेस्ट करेगा. सो आई वांट टू यूज लेट्स से आउटकम. ओके, ऑलराइट, एंड देन आई से semicolon and then control enter. Now I would get all the details from my outcome table. Alright, so let's go back to our Excel example. जहाँ पे हमने क्या बोला था कि let's go back. What was it? I forgot what we were talking about. I think we were talking about for, wait a minute. You were saying for our boss, okay? For our boss, how many applications are approved? So in other words, our boss ने कितने सारे applications approve किए हैं? That's what we need. So we need our boss ने कितने सारे applications approve किए उसका count. So let's say example Excel में 245 है. Now let's run this in SQL. So we'll continue with our example. So select star from fact applications will give you all the results from fact applications. But that's not what we want. What we want was the count of applications that our boss approved. तो अब इस डेटा पे मैं फिल्टर मांगू where analyst ID is equal to our boss. And don't worry about this because I will explain all of this in detail in the next videos. And then दूसरा criteria क्या था? Outcome ID was equal to A. Okay? और मेरे को इसका count करना है ना? So I'm going to say, I'll explain all of this, but don't worry. I'm just giving you an example of how a typical SQL statements are run. Okay? So I'm going to select count star from fact applications where analyst ID is equal to R boss and outcome ID is equal to A और approve. अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को बताएगा कि R boss ने इस पूरे रिकॉर्ड पे, पूरे डेटा सेट में 2747 एप्लीकेशंस अप्रूव किए. Alright, this number will not match with Excel क्योंकि Excel में हमारा डेटा छोटा था, and when we moved into SQL or database, that's the whole point we created a database that हमारा डेटा बड़ा है. Okay. Okay, I'll stop here. In the next video, we'll talk something about SQL order of operation. इसका मतलब क्या है कि SQL में जब तुम स्टेटमेंट लिखते हो ना, I'll give you, let me show you one query. देखो, ऐसा एक क्वेरी, बड़ा क्वेरी है राइट, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है. तो पहले कौन सा लाइन रन होगा, उसके बाद कौन सा रन होगा, उसके बाद कौन सा रन होगा, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर तुमको ये ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस समझा ना, it will make your life a lot easier because you'll be able to understand the SQL statements correctly. You will be able to write effective SQL statements. So we will talk about that in the next video. We'll see you there. Bye.